Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 4, paper 2 5054. Let's start. Question 4. Protactinium 234 is a radioactive isotope of protactinium that decays to uranium 234. So compare the nuclide notation with the nuclide notation of uranium. Protactinium की nuclide notation और uranium की nuclide notation हमने compare करनी है. As we can see, इसका जो atomic number है that is increasing by 1. So that is supposed to indicate something. And reduce what this shows about what is emitted from a nucleus and protactinium as it decays to uranium. अच्छा अब हमने तीन टिक करने हैं boxes appropriate to what the nuclide notation is. So nuclide notation as that is telling us that in the conversion एक proton increase हुआ है, right? One proton has increased, है ना? And as we all know, when a beta particle is emitted, the atomic number, aka the proton number, is increased by 1, while the mass number is unchanged. So as we know कि a beta particle is emitted. अच्छा, जो हमारे पास nuclear notation है, that does not prove in any way that an alpha particle is emitted. So it is possible to tell, but it is just not emitted. Right? Alpha particles का आपको पता ही होगा. The atomic I mean the atomic number and the mass number. Those are two different things and they do not add up. तो आगे gamma ray is emitted. Gamma ray is not possible to tell. ठीक है ना? Gamma rays will not be possible to tell with the change of atomic number. आगे देखते हैं. The most abundant isotope of protactinium is protactinium 231. Explain by referring to nuclear composition why protactinium-231 and protactinium-234 are both isotopes of the same element. So isotopes of the same element क्या क्या चीज हमें शो करती है that the isotope is of the same element? It is the proton number. As simple as that. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना proton number is what shows us the authenticity of one being the isotope of the same element. आपको इतना एक्सप्लेन भी नहीं करने की जरूरत. आप बस ये लिख देना proton number is the main indicator of this, right? तो यार मैंने बस दो वर्ड्स का प्रोटॉन नंबर लिख दिया या एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं आप. Explain by referring to the nuclear composition why protactinium-231 and protactinium-234 are different isotopes of that element because of the neutrons being the same. Neurons same, proton different. ठीक है ना? So let's check. ये है B हमारे पास. B. Both have 91 equal number of protons. They have different number of neutrons in nucleus/nucleon. आगे देख लेते हैं. A teacher places a radiation detector on a bench in a school laboratory and it switches it on. The teacher measures and records the background radiation count rate. Describe what is meant by background radiation and state two significant sources of the count rate recorded by the teacher. So for example, you're in a classroom of children, right? आपकी क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और 30 में से 30 बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, है ना? तो दैट इज ऑल बैकग्राउंड आवाजें, background noises, right? But when you're talking one to one with a friend of yours, you'll be focusing on that friend more rather than the background. So background radiation is the radiation naturally present inside the environment. ठीक है ना? Background radiation जो होती है, it is a low level ionizing radiation जो constantly present होती है हमारे environment के बीच में. Coming from various natural or man-made sources, it depends. It is always present and it is not associated to a specific event. तो यार ये कोई event से नहीं relate हुई होती. It is just always present.
ठीक है ना। सोर्सेस अब बताने हैं हमने, अब हमने सोर्सेस बता देने हैं। सोर्सेस सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, दैट इज द कॉस्मिक रेडिएशन। जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेस से आते हैं, हमारे सन से या कोई और कॉस्मिक सोर्स से, वो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू बैकग्राउंड रेडिएशन। और एक और भी हो सकता है, विच इज द नेचुरल रेडियोएक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं occurring in our nature of the mother earth, such as uranium, thorium वगैरह वगैरह, and they emit radiation। और जो रेडॉन गैस होती है in particular is a significant source of background radiation। So hopefully that is out of the way। So sources, benches, building materials, human bodies, air sources, radon, cosmic sources, sun, space, like I told you। अच्छा जी। The teacher moves a sample of protactinium-234 so that it is next to a detector. Suggest one precaution that ensures that the sample is moved in a safe way. Sample is moved in a safe way. It अगर आपसे उन्होंने पूछा ना सैंपल इज मूव्ड इन अ सेफ वे, तो उन्होंने बोथ जो ह्यूमन है उसकी प्रोटेक्शन का भी सोर्सेस पूछे और जो सैंपल है उसकी प्रोटेक्शन के भी सोर्सेस पूछे। जो ह्यूमन के हो गए वो दैट वुड बी लेड लाइन, जो आर्मर सा होता है, राइट, आर्मर या क्लोथिंग, और लेड लाइन ग्लव्स भी हो गए जो उसकी, या आप वो भी कह सकते हैं गॉगल्स जो होती हैं, राइट, इन मैनी केसेस। और अगर आपने उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है, लाइक द सैंपल सेफ्टी, तो आप उसको टॉवल यूज करें उसके लिए। तो या ये देख लेते हैं हम। टोंग्स यूज कर ले, ट्वीजर यूज कर ले, वेयर लेड लाइन क्लोथिंग, lead line gloves, wear goggles, reduce time of exposure। Yeah, the more you're like exposed to that radiation, the more harmful it is। Acha, the count rate is measured every 20 seconds with a sample present and corrected for background radiation। Figure 9.1 shows a graph of corrected count rate against the time of for the protactinium 234। ठीक है ना। तो हमारे पास हर 20 सेकंड्स के इंटरवल के बाद एक हमारे सैंपल का काउंट दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, एक सैंपल दिया हुआ है और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट रेट भी दिया हुआ है। ठीक है ना। द कर्व इज बेस्ट फिट लाइन, एक्सप्लेन व्हाई द क्रॉसेस डू नॉट lie on the curve। It is because जो होता है ना, it fluctuates, the count rate fluctuates whether it is a bit up or it is a bit down, but on average जो average होगा ना, that will be this, that will be kept constant। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 बर्गर्स खाने का रोज का गोल रखा हुआ है, राइट, या आप रोज सुबह 2 बर्गर्स खा लेते हो, रात को 1 बर्गर खा लेते हो, या आप रात को 1 बर्गर खा लेते हो और सुबह 2 बर्गर्स खा लेते हो। आई मीन दैट्स द सेम थिंग। मतलब या आप रात को 2 बर्गर्स खा लेते हो, सुबह 1 बर्गर खा लेते हो, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स एंड इट फ्लक्चुएट्स। तो या, well, yeah, as I told you about an average value, that means the value is average but it fluctuates up and down। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बेच रहे हो, आप चीज बेच रहे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 यूनिट बेची है, रात को 1 यूनिट बेचा है, लेकिन अगले दिन आपने सुबह 1 यूनिट बेचा, रात को 10 यूनिट बेचे। सो इट इज फ्लक्चुएटिंग। Radioactive emission in random process occurs at random intervals, measurement fluctuates। तो या, using figure 9.1, determine the half-life of protactinium-234, show your working। So protactinium-234, तो basically अब हमने निकालना है इसकी half life, and half life will be very easy to calculate because we have been given the count rate and we have been given the time। So what is hard in it? So we initially have a position where the count rate is 60। ठीक है ना, आई मीन नॉट 60, 58। 58 है हमारे पास काउंट रेट। तो 58 का काउंट रेट है हमारे पास एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए हमें
क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले? वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द काउंट रेट इट वुड हैव व्हेन द वैल्यू इज हाफ। तो 29 बच जाएगा। अगर आपका 58 की इनिशियल वैल्यू है ना, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, तो अगली हाफ लाइफ कब आएगी? एट 29। 29 हमारे पास कहाँ है? दिस इज 20, 22, 24, 26, 28, और ये दिस इज समवेयर अराउंड 29। ठीक है ना? 29 इधर आ जाती है, ठीक है ना? वो सॉरी, लेट्स लेट्स लाइक रीडो इट। 22, 24, 26, 28, और ये यहाँ आ गई। तो दिस इज अबाउट, जब हम नीचे स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा 60 है, 44, 46, आई मीन 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. So it is around 68. So let's check. So the value of time is between 66 to 63.5. तो या आगे देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स फ्रॉम कर्व 50 और 29 और 70 है ये हमें 70 दिखा रहे हैं। 29 पे ऑफ कोर्स इट वुड फ्लक्चुएट, और इट वुड, अगर ह्यूमन आई जो होती है इट इज नॉट दैट परसेप्टिव, तो हमें एक मार्जिन ऑफ एरर दिया होता है, राइट? हमें एक मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ है विच इज बिटवीन 64 टू 74। तो हम उसके बीच में अगर कोई वैल्यू लिख लेंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड राइट। तो या दे आर नॉट दैट इनकंसिडरेट। सॉरी, ये क्या हो रहा है? सॉरी फॉर दैट। So yeah, any value between 66 to 73, I told you the method, so you can do it yourself. आगे, 4. The uranium 234 formed from the protactinium, sorry, 234 is also radioactive. Its half-life is many thousand years. तो जो हमारे पास इनिशियली प्रोटैक्टिनम था, प्रोटैक्टिनियम, उसकी हाफ लाइफ कितनी थी? इट इज 60 सेकेंड, 67 तो आगे, तो the half-life of the uranium, its half-life is many thousand years, right? इसकी 66 इसकी seconds में है, और इसकी many thousand years में है। Explain why the radiation from uranium 234 does not affect the count rate measured in this experiment. तो basically what they are saying is कि जो हमारे पास इसका काउंट रेट है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ है, वो इफेक्ट क्यों नहीं हो रही बाय द यूरेनियम 234? इट इज बिकॉज जो यूरेनियम 234 है, उसके जो half life है that is many thousands of years, and it will decay at a very 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 slow rate. And when it decays at a very 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 slow rate, it will not affect the protactinium, because it is gonna protactinium is gonna, इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज वे बिलो व्हाट द हाफ लाइफ इज ऑफ यूरेनियम। अगर अभी इन्होंने बोला होता ना द हाफ लाइफ इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स, राइट? यहाँ 60 सेकंड्स लिख दो, आई मीन 120 मिनट्स लिख, 120 सेकंड लिख दो, तो दैट वुड बी अ कंसिडरेबल थिंग। बट सिंस द half lives are so far apart, इसकी half life 66 seconds है, इसकी half life thousands of years है, since they are so far apart, we cannot put them in the same measure. Large half life, slow decay, radiation count rate very much less than protactinium, or nearly all measured radiation count rate due to protactinium. Because protactinium की इतनी जल्दी गिर रहा है ना काउंट रेट, that the uranium is not even gonna like emit one particle, let's say.
Large half-life, slow rate of decay. You can just write that. So yeah, that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.